Friends, welcome to my YouTube channel. So in the last video मैंने जो स्टॉक्स बताए थे उसमें से तीन या चार थे जो मैंने ऑलरेडी बाय कर नो इट्स थ्री जो मैंने बाय कर लिए थे एंड आई विल शो यू इन डिटेल इन दिस वीडियो. एंड द थिंग इज दैट इफ यू सी इन द लास्ट वीडियो मैंने बताया था जब कैंडल यहाँ पे था एंड आई टोल्ड दैट आई थिंक दैट ये रिवर्स आ सकता है. And exactly the same thing is happening, the contraction is happening, but the thing is to see is that कि यहाँ पे support लेता है कि नहीं लेता है. And definitely like I'm not giving a guarantee, but it's gonna happen because if we see the past यहाँ पे भी support आने वाला है and then it will take a U-turn, and in that U-turn I think that we can entry at uh, if here it makes a doji tomorrow, and after that it gives a bullish engulfing time, so we can enter at this point, and it would be very nice setup, like giving a good risk reward ratio. And further in this video I'll show you some stocks which you can see in December, बिकॉज द इन द लास्ट नवंबर मंथ जो मार्केट में फॉल आया उसके रीजंस के बहुत सारे सेटअप्स बन गए एंड विच इज़ वेरी गुड फॉर्मेशन एंड विच गिव्स द क्लियरिटी because in market when market falls that's give the clarity about that कौन से स्टॉक से जो ज़्यादा गिर रहे और कौन से स्टॉक से जो नहीं गिर रहे. सो जो नहीं गिर रहे हैं वो स्टॉक्स डेफिनेटली अच्छे, बिकॉज देयर विल बी द सम रीजन दैट people are not selling that stocks, and meaning of people is FII, DIIs and all. Because अगर FII ने बेचा है, like FII sold near like in this quarter it they sold nearly 1 lakh 80 crores rupees shares. बट ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे उन्होंने बाइंग किया है, एंड द एग्जांपल इज पीटी इंजीनियरिंग ओनली, जिसमें FII की बाइंग लास्ट क्वार्टर से डबल हो गई है नवंबर में. सो विच इज़ अ वेरी इंडिकेशन दैट अगर लास्ट क्वार्टर देखा जाए तो ये क्वार्टर यहाँ से कहीं से ही चालू हुआ है. इट्स लाइक नवंबर, तो सितंबर क्वार्टर से नवंबर तक में अगर ज़्यादा हुआ है तो बाइंग यहाँ पे ही रही है, कहीं पे यहाँ पे. एंड यू कैन एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द दैट कंसोलिडेशन विच टेल्स दैट यहाँ पे बाइंग हो गई है, बिकॉज यू कैन सी दैट वीक्स आर देयर इन एवरी स्टॉक्स, और ये कंटिन्यूएशन एक है जहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है. सो ऑब्वियसली वी कैन से दैट देयर वुड बी लाइक एक सेटलमेंट हो ऑफ बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स. सो दैट इज द थिंग. एंड द शेयर्स ने कभी भी जो ये बेस बनाया था, ये जो बेस था उसके नीचे कभी ब्रेकडाउन आया नहीं है, उसके ऊपर ही रहा है. सो विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड साइन ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टॉक. एंड आई वॉज गोइंग टू बाय ऑन द थर्सडे, बट ये सेलिंग देख के मैंने सेल नहीं किया था, सॉरी बाय नहीं किया था. एंड देन नेक्स्ट डे इट मेड अ स्मॉल ड्रैगन कैंडल, एंड दैट ड्रैगन फ्लाई कैंडल में भी एट द एंड थोड़ा सेलिंग आ गया था, बट स्टिल आई बॉट इट, and today I'm plus like near 1%. So yeah, I bought PT Engineering, and one can also buy that stock. Second is 361, and in 361, this was the time I was not sure, and again it gives the selling from upper side. But once it break this resistance, we can say that we will see the all-time high in in that week or in very few days. Because if we see the volumes, every green candle has a very good volume, so we can say that buyers are more active than sellers. Dodla Dairy, if you see the Dodla Dairy, the revenue is very strong, and they are consistently from 3 years they are improving, so which is the very good sign. एंड ऐसा नहीं है कि वो साइन खाली यहाँ पे ही है, इवन स्टॉक्स में भी दिखा है, स्टॉक इज कंटिन्यूसली गोइंग अप एंड गिविंग अ गुड रिटर्न्स फ्रॉम इट्स नियरली लाइक 800 से 1200 तक आ गया है इन 1 ईयर, विच इज़ वेरी गुड सर, गुड साइन ऑफ अ स्टॉक. एंड एक यहाँ पे नया बेस बना रहा है,
And this is just a stock to keep in watch list, because अभी तक आई एम नॉट श्योर दैट, बिकॉज जो मूविंग एवरेजेस है वो जो फॉर्मेशन में आने चाहिए वो अभी तक आए नहीं है. सो आई थिंक मे बी यहाँ पे भी सेम एक यूरेका जैसा एक वन मोर ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होगा. आई थिंक वन मोर कॉन्ट्रैक्शन विल हैपन फ्रॉम यर, बिकॉज जैसा जो बिल्डअप चाहिए आई थिंक उसके लिए और एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्शन आना चाहिए. बट आई से दैट you should keep this stock in a watch list. Ask Automotive is the टू व्हीलर्स में सबसे अच्छी ब्रेक्स सोली ब्लैक ब्रेक्स बनाती है. एंड दे हैव द मार्केट शेयर ऑफ 60%, which is also one of the most good sign, because they have a little bit, I won't say monopoly, but बाकी सब जो शेयर्स है उनके सामने जो भी है बनाने वाले, they are having a market cap of like 5%, 6%, 7%. So कंपटीशन में देखा जाए, सो दे आर ऑन लाइक वेरी गुड हैंड्स. एंड आई डोंट थिंक सो दैट अपकमिंग कोई ऐसी कंपनी है जो आ सके आज ऑटोमेटिव के सामने. सो दे आर हैविंग एन एडवांटेज राइट नाउ. And in Ask Automotive, they are also having a good FII holding and DI holding. But the main thing is that when FII was selling in this market in this quarter, but इसमें उसका opposite हुआ है. FII increased the stake in this company, which makes a very point of view to watch these stocks and keep in watch list. Zen Technologies, like I don't think that these stocks need a introduction, because बहुत अच्छा return दिया है in very short time. And I think this is a phase two. Let me see. Yeah, as we see, this is a phase two, because ये phase one था और ये phase two है. So I think that more that bull run is remaining in Zen Technologies. And जैसे ही आज breakout दिया था, मैंने already buy कर दिया stock. Seeing this candle uh, on Friday, I was little bit confused and I was thinking that what will happen. And I think मैंने Zen Technologies last video में भी बताया था that seeing this consolidation, it is being very tight, and if it goes up, it will give a good returns at very short time. And last but not, I think this is the last. Yeah, it is the last. Name India, which is Nippon. And Nippon का बोलने के लिए ज़रूरत ही नहीं है, because in the last years, I won't say months, but in last 2-3 years after Corona, everybody started doing SIP. And Nippon में इतना cash inflow आ गया है that they are having a very good, I think, uh, SIP में ओनली एक निपॉन ही ऐसी है जिन्होंने मालूम है लाइक राउंड ऑफ मनी डालना मीन्स ये कर दिया, बंद कर दिया है. You have to do SIP to put money in Nippon mutual funds. बाकी सब में तुम लमसम डाल सकते हो, but only Nippon is the one which is not giving the option of lump sum, because the reason is that they are thinking that if somebody put a lump sum money in the wrong time, तो मे बी उन्हें सामने वाले को ऐसा लगेगा, लाइक द पर्सन हु इज अननोन टू स्टॉक मार्केट, दे विल फील दैट निपॉन इज नॉट गुड or something is bad in happening Nippon, but it is not like this. That's why they are not supporting a lump sum system, and they are having that SIP. And the another reason is that they are having so many cash that doing lump sum, it is bit confusing for them, and it is bit hard to them to to put that money in stocks. So that's why they are doing in SIP form. And that's it for today. And if you like my channel, so please subscribe and please share this video to every person who likes to do swing trading. And if I buy any stock, I'll give a point out on the next video. But right now for today, that's it, and see you in next video. Thank you for watching this video. Bye bye.